Dear learner, in this video we are going to see how to solve the numeric sum of the retirement of a partner. Now see, in the question paper, whenever you will find the question regarding the retirement of partner, first thing you need to do, you need to read the question properly and tick mark the adjustment. Right? The step number 1 is read the question and tick mark the adjustment. Right? And along with the tick mark of adjustment, you are supposed to find out the old profit sharing ratio that will be given in the question itself. If it is not given, then it should be equal proportion. शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन हो रहा है उसका नाम हमें मार्क करके रखना है, बिकॉज 3 पार्टनर दिए हो गए ए बी सी, राइट. ए भी रिटायर हो सकता है, बी भी रिटायर हो सकता है, सी भी रिटायर हो सकता है. तो हमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो उस हिसाब से करना पड़ेगा. दैट इज वाई शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्या है ओल्ड फॉर्म में वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ इट इज गिवन, and if necessary, if required, then we need to find out the new profit sharing ratio. Otherwise we are not supposed to find out the new profit sharing ratio. Then after tick mark the adjustment, prepare the revaluation account, partnership capital account and balance sheet after the retirement of a partner. Whatever question will demand from you, according to you need to prepare. Maximum 3 things they can demand. One is revaluation account, second one is partner's capital account, and third one is balance sheet. Next is starting from the liability side, transfer all the liabilities on the liability side of the new balance sheet after the retirement, except any reserve and balance of capital. यानी कि balance of capital and reserve के अलावा जितना भी liability है that we are supposed to transfer to the new balance sheet that we are preparing. अगर balance sheet बनाने को ना बोला हो तो हमें transfer नहीं करना है. Distribute the amount of reserve among all partners in the old profit sharing ratio and transfer the amount of capital to the credit side of partners capital account. ये जो ट्रीटमेंट हम एडमिशन के टाइम पे कर रहे थे वैसे ही ट्रीटमेंट यहाँ पे देनी है. जो भी रिजर्व है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, दैट वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी कि रिजर्व या तो फिर प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हैं वो हमें पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर कोई लॉस दिया है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दी है, then that we are supposed to debit it. We are supposed to write on the debit side of partners capital account in their old profit sharing ratio. Transfer all the assets to the new balance sheet asset side except the goodwill and deferred revenue expenditure. These will be distributed between the old partner in their old profit sharing ratio. यानी कि अगर गुडविल दी है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया है, तो ये सारी चीज़ें राइट ऑफ होगी बिटवीन द पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसके अलावा जितनी भी एसेट्स है दैट वी आर सपोज टू ट्रांसफर टू द न्यू बैलेंस शीट asset side. Give the effects of treatment of goodwill that we have seen in our earlier video. Treatment of goodwill. Give the 2 effects of every adjustment. Every adjustment will have 2 effects. ये याद रखना. Close the revaluation account and transfer the profit and loss to the old partners capital account. यानी कि जो पुराने पार्टनर्स है उसके बीच में रिवेल्यूशन अकाउंट का आफ्टर द इंक्रीज एंड डिक्रीज of assets and liability we have given the effect. After that whatever profit or loss is there that we are supposed to transfer to the distribute to the old partners in their old profit sharing ratio, and that profit will be transferred to the partners capital account credit side. अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड. Close the retiring partners capital account and transfer the balance to the liability side as a loan to him or to the cash account as a payment as may be given in the adjustment. अभी क्या करना है, रिटायरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों के तीनों पार्टनर में से सबसे पहले हमें क्लोज करना है रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट. रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करने पे आपको एक एडजस्टमेंट दिया होगा कि रिटायरिंग पार्टनर को कितनी अमाउंट कैश में पे करनी है. अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है then we are supposed to keep whatever the closing balance of retiring partner is there that we are supposed to keep as a loan of him, and that loan will be transferred to the liability side, and liability side हम लिखेंगे ABC whatever the partner's name is given उसकी लोन के तरीके से liability side हम लिख देंगे. अगर क्वेश्चन में बोला है कि we are supposed to transfer the loan amount and this much of loan and this much of cash, then that cash will be paid from cash balance and remaining balance will be kept as a loan, right? So according to you need to give the effects.
Then after it is given, close the partner's capital account and transfer the capital of all the partners except retiring partner to the balance sheet liability side. यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, कैश या तो लोन में इफेक्ट दे दी, बाद में रिमेनिंग जो 2 पार्टनर्स बचे हैं या तो 3 पार्टनर्स बचे हैं उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है दैट वी आर सपोज टू ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेड ऑफ कैपिटल. एंड लास्ट में आपको क्लोज करना है कैश अकाउंट and whatever the cash balance is there that you are supposed to transfer to the balance sheet asset side, and at the end your balance sheet will definitely get tallied. Thank you.